participants, guests from outside UT, Dr. Seema Kakran and Shilpi, my staff and my students, a very good morning to all of you. It is a matter of great honor and pleasure to welcome you all to this two-day national workshop on gender audits, crafting an ecosystem of equality. I extend a very warm welcome to my delegates who have traveled all the way from Delhi to be a part of our program. Dr. Meenakshi Gopinath has been a principal of the very prestigious Lady Shri Ram College, New Delhi for about 26 years. She has been a member of UGC, the first woman to be nominated to the National Security Advisory Board and awardee of the most prestigious Padma Shri Award. This is a very brief profile that I am presenting. She has much more to her credit. After attending a workshop with Madam in 2019 in Delhi, it was my deep desire to organize a similar kind of a program for the faculty of Kashmir Division. Professor Dr. Yasmin Ashai, Director Colleges, Department of Higher Education, Union Territory of J&K. Dr. Meenakshi Gopinath, Founder and Honorary Director, Viscom. Madam Seema Kakran, Deputy Director, Viscom. Ms. Shilpi Shabdita, guests and training partners from outside the state. Dr. Seema Nath, Principal, Host College, faculty and participants from Kashmir Division Colleges. Assalamu alaikum and a very good morning to all. Gender equality and women's empowerment are matters of fundamental human rights and prerequisites to meeting sustainable development goals around the world. Today we plan to highlight benefits and barriers to gender equality within sustainable ecosystem management. Further, we plan to zoom in on solutions outlining key tools and strategies. We also plan to highlight examples of gender-responsive interventions. Over the last several decades, principles of gender equality and women's empowerment have permeated into numerous internationally agreed upon goals, ranging from commitments on human rights, peace, security, climate change, desertification, biodiversity, and sustainable development. It is a common misconception that gender equality only concerns women. Gender equality involves and benefits both women and men as well as boys and girls. Ecosystems are highly gendered. Women and men derive different values and benefits from ecosystems. And Dr. Seema Nath. It's really, and of course Rubina, how can I ever forget? It's really a privilege for us at Viscom, my colleagues, Seema Kakran and Shilpi, to be here with you today. And it's wonderful, we're coming back to Srinagar after a few years, and we can see the space looking different. And it's a real honor to be able to be with all of you from so many different colleges in the Union Territory. Okay. This is okay? It's okay? Kamari, can you hear me or do you want me to? You can. I don't want my voice to be too loud. But I just first of all want to thank Yasmin. I know she's Madam Yasmin Ashwar, but for me, she's Yasmin. And of course, my dear friend Seema. And I want all of us to applaud how the leadership of these two fantastic women has changed the whole landscape. Very often it says that it takes two to tango, and it's often talked about men and women in tango. But when you put two women together, oh boy, what energy does it create? One of them is a pathbreaker in the field of education, both of them in the field of higher education. One brings a deep understanding of psychology. Of what she spoke, every word has been imbibed and it's so precious for us. Well, Professor Meenakshi Gopinath, Founder and Honorary Director of Viscom, my colleague
Professor Dr. Seema Naz, Principal of the host college, a very dynamic personality. My another colleague and friend, Professor Rubina Jabin, Coordinator of the program. Madam Seema Kakran, who is the Deputy Director of Viscom. All my dear colleagues from various colleges who've joined us as participants, and colleagues from this host college as well as the non-teaching faculty of the college, a very good morning and Assalamu alaikum. At the outset, I must thank Viscom for partnering with Govt. College of Education for this important workshop on gender auditing in higher educational institutions, gender audits, crafting an ecosystem of equality. Well, personally, I have a long and lovely association with Viscom. May I now request Dr. Meenakshi Gopinath ma'am to kindly step forward, and may I request madam to present a memento to Madam Gopinath. May I also request our guests and as much a family member to the Women's Studies Center, Madam Seema Kakran, to kindly step forward. May I also request our one more training partner from Viscom, Madam Shilpi Shabdita, to join us on stage for the felicitation ceremony. May I request ma'am to present the memento to Madam Shilpi as well. Thank you all for joining us for the felicitation ceremony. Kindly have a seat on stage. We will now... फंक्शन नहीं है आज का, जो ये 2 दिन का वर्कशॉप है, जेंडर ऑडिट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कैसे हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें अपने इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो विमेन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे कोएड इंस्टीट्यूशंस हो। जेंडर ऑडिट का मतलब ये है कि हम ये ना सोचें कि जो औरतें हैं अब वो सिंबॉलिकली वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन हम चाहेंगे औरतों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजरियल पोजीशंस पे हो। फिर हम ये देखें हमारे इंस्टीट्यूशंस इक्वालिटी के बहुत से मेजर्स होते हैं। सिर्फ ये मेजर नहीं होता है कि हम इंस्टीट्यूशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी हर एक जगह है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जहां हमारे कॉलेजेस में या वर्क ऑर्गेनाइजेशंस पे हों, लॉ के तहत उनको हम हल करें, बिकॉज हमारी यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं। इक्वालिटी के मेजर्स जो हैं औरतों के लिए वो सारे पूरे हों हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कोएड इंस्टीट्यूट हो या लड़कियों का इंस्टीट्यूट हो। उस हवाले से 2 दिन का प्रोग्राम है जो हमारे वर्कशॉप है, और सारे कॉलेजेस जो हैं कश्मीर डिवीज़न के वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी एक टीम आई है जिनका एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है जेंडर ऑडिट में, और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री वो ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो आगे ये 2 दिनों में अपने वर्कशॉप के मोड से पार्टिसिपेंट्स को सिखाएंगे कि जेंडर इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड होने चाहिए। ये नहीं हम सोचेंगे कि जो कोई औरत किसी इंस्टीट्यूट को लीड करेगी वो जेंडर सेंसिटिव होगी, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो वही पेट्रियार्की के जो पैरामीटर्स हैं उनको ही परपेचुएट करेगी। तो हर एक औरत, हर एक आदमी को साथ साथ लेके इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है कि जो जेंडर एक सोशलाइज्ड कॉन्सेप्ट है उससे हम बाहर निकल के कैसे आएँ। ना कोई आदमी सुपीरियर है ना इन्फीरियर है औरत से, ना कोई औरत इन्फीरियर या सुपीरियर है। बायोलॉजिकली एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से डिफरेंट है। इस चीज़ को हमको समझने की कोशिश करनी है, अपने रोल्स को समझना है, औरतों की पर्सपेक्टिव को उतनी ही इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है जितने आदमी को। औरतों का रोल पॉलिसी मेकिंग में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आदमी का है। इनफैक्ट अपना अपना पर्सपेक्टिव है, औरत का एक अपना पर्सपेक्टिव है और आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। जेंडर इक्वालिटी पे हमने यहाँ पे ये 2 रोज़ा वर्कशॉप, नेशनल वर्कशॉप किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। ये अंडर G20 इनिशिएटिव हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि जेंडर एजुकेशन, जेंडर इमेंसिपेशन और जेंडर इक्वालिटी पे जो काम होता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे अब बहुत सारे जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे बैठ के पढ़ती हैं। तो इन कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे स्टाफ को जो है दे शुड बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि जेंडर इक्वालिटी क्या है। इसीलिए हमने ये 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया है। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हमारे कमिश्नर सर श्री आलोक कुमार के पैट्रनेज के अंडर हुआ है,
और इसमें हमारे जितने भी कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस हैं 62 कॉलेजेस वो सारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अपने सारे कॉलेजेस जितने भी कश्मीर डिवीज़न के हैं, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो दिल्ली से आए हुए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में पैन इंडिया ये प्रोग्राम जेंडर ऑडिटिंग का कराते हैं, वो 2 रोज़ा इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ताकि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या क्राइम जैसे कि आपने अभी कहा, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम चाहते हैं कि एजुकेशन ही एक पोटेंट सोर्स है जिसे हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। इसी इंटेंट से हमने ये 2 रोज़ा प्रोग्राम अपने इंस्टीट्यूशन में रखा हुआ है।